सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं गोकू की वाली ड्राइंग करने वाला हूँ और इस वीडियो में आउटलाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं दिखाने वाला हूँ और गाइस नेक्स्ट पार्ट में मैं कलरिंग करने वाला हूँ। तो आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड का यूज़ करने वाला हूँ और गाइस ड्राइंग पेपर का जो साइज़ है वो है A4 ब्रूस्टो का 300 GSM। सो सबसे पहले पेपर पे ग्रिड बना लेते हैं, देन ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज आपको क्या काम करना है कि जो आपने मोबाइल पे ग्रिड बनाई है उस ग्रिड को और पेपर पे जो बनाई है उस दोनों ग्रिड को गाइज आपको इक्वल करना है और आपको अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से आप बॉक्सेस काउंट करके स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो गाइज अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और गाइज रेफरेंस फोटो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इससे पहले भी मैं गोकू की ड्राइंग बना चुका हूँ गाइस, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो अब देखते हैं इस वाली वीडियो पे कैसा रिस्पांस आप लोग देते हो। और इसकी आउटलाइन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं एक एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करके बना रहा था। जो भी रेफरेंस में सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी, क्योंकि रेफरेंस में काफ़ी ज़्यादा हार्ड इमेज है गाइस ये, और इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत टाइम टेकिंग वाला वर्क है। सो अगर आप भी इसको ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छे से इसकी आउटलाइन बनाओ, टाइम लगाओ, 1-2 दिन ले लो, बट अच्छे से बनाओ। रेफरेंस को देख के तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा था, बट जब बनाने बैठा तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क था मेरे लिए। तो इसके अंदर जो भी डिटेलिंग है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि कलरिंग इजी हो जाए। और गाइस ये सारी चीज़ें मैं पूरी ड्राइंग में करूँगा तो इससे कलरिंग मेरी इजी हो जाएगी। और इस ड्राइंग में जो कलर यूज़ करने वाला हूँ वो वाटर कलर यूज़ करने वाला हूँ और इसका कलरिंग पार्ट भी काफ़ी जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए आप वेट करना। तो चलो अब ड्राइंग को देखो और एंजॉय करो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. सो आउटलाइन तो कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।